this video, our team, Runtime Error, is going to present our idea regarding the wastage of our time at salon. But directly going to idea, let us first understand the problem statement. So, we know that in our everyday life, personality plays an important role in our success in every field of work. But personality comes with the grooming, as grooming is the most important part of our personality. We need regular haircuts and trimming so that we could look professional and nice. But there is one big problem in this, that whenever we go to our barber at the salon, we see that he is crowded with the people and we have to wait for our turn to come, and this wastes our time and we can do other work in that time. But here is our solution, that we provide an application or a website that will link the customers to the salons from the comfort of their home. Let me explain you it easily, that this is you at your home and this is the shop of the barber. You cannot go directly at this by wasting your time, but you can use our application so that you can check whether the barber is free at this time or not, how many customers are there to him, so how much time you should take to go to him, at what time you should go to the barber. You can also take the appointment from our application so that you can choose the time in which you are available for your haircuts. So let us now understand the use cases of our idea. So use cases is from the perspective of the barber. There is that it will increase the productivity of barber, as he will see the less crowd in the salon and he has a less pressure of doing the work fastly. So he can do the work efficiently and productively. From the perspective of user, there is the main reason that it can save everyone's time, as the pre-scheduled appointments will have no time for the waiting area, as you have to wait, don't have to wait for the barber, and you can go directly when your appointment is. Now, I would like to tell you more about flow of development of our idea. First, understand the problem. In this phase, we are going to understand what the actual problem is. Second, prototyping. In this phase, we are going to make an initial prototype of our idea. Third, test with user. After completing the second step, we are going to test our prototype with real users so that we can find a bug in our website or app. Fourth one is our masterpiece. Break down the problem. In this phase, we are going to break down every problem into small pieces so that we can make every small problem user friendly, so that no user have a problem to use our app. In the last, we are going to launch our idea in the form of web or app. I am going to describe the business model of our idea. Our idea is a B2C model, business to customer model. In our idea, we are providing a pathway between the customer and the business. तो हम इसमें अब क्या कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि जो कस्टमर होता था उसको पहले बार्बर की शॉप पे जाना पड़ता था और देखना पड़ता था कि बार्बर फ्री है या नहीं. अगर बार्बर फ्री नहीं है तो उसको वहाँ पे वेट करना पड़ता था कि उसकी टर्न आए और उसके बाद बाल कटवाए. तो अब हम हमारा आइडिया से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो कस्टमर है वो घर पर बैठकर ये देख सकता है कि उसका बार्बर फ्री है या नहीं. अगर उसका बार्बर फ्री है तो जाके अपने बाल कटवा सकता है. अगर उसका बार्बर फ्री नहीं है तो वो अपने बार्बर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है और टाइम भी ले सकता है कि किस टाइम वो आए और बाल कटवा जाए. तो अब इससे क्या होगा, इससे दोनों का टाइम बचेगा. लेकिन ये होने के बाद आप ये सोच रहे हो कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो अर्बन क्लैब से क्या अलग है. तो इसमें एक मेन डिफरेंस है कि अर्बन क्लैब्स में क्या होता था कि जो बार्बर है ना वो कस्टमर के घर पर जाता था. इससे दोनों का टाइम खराब होता था कि जो ट्रैवलिंग में टाइम लगा वो भी टाइम गया और जो बार्बर को वहाँ अपना सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करा उसमें भी टाइम लगा. लेकिन हमारे बिजनेस मॉडल में क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, बार्बर भी और कस्टमर भी. बार्बर और कस्टमर दोनों ऑनलाइन है इस टाइम और दोनों अपना अपॉइंटमेंट लेके और फ्री टाइम देख के अपना काम कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, दोनों का टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी दोनों के काम भी. तो हम आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये मॉडल समझ में आ गया हो और थैंक यू.